Hi guys, how are you? I hope you're doing well, everyone. So you must be thinking, who's this guy, right? Before we get there, let me give you a small intro about myself. I'm Aditya, a fitness enthusiast and a software engineer. Okay, that's my full-time job. Helps me put the bread on the table. And fitness is, I would say, more than passion. It's a part of life, which helps you to achieve other things. So don't just think about me as another fitness enthusiast on the internet. I would say 50-50. You can think of me as another fitness enthusiast, but not actually, someone who's going to tell you about exercises or, just eat some food or, I think in the industry, there are a lot of things which are still yet to be told or, said. एंड जो जनरली हम लोग डिस्कस नहीं करते फिटनेस इज नॉट ओनली लिफ्टिंग वेट्स और रनिंग और लाइक ईटिंग बैलेंस डाइट इट्स अ लाइफ स्टाइल विच कम्स फ्रॉम माइंड फ्रॉम हेयर नॉट लाइक कि सुबह उठे यहाँ चले गए कर लिए यस दैट इज पार्ट ऑफ इट बट यू नीड अ मच मोर बिगर फोर्स बिहाइंड इट राइट सो बेसिकली I'm here to talk about few things, how what's going generally in today's world, how our aspect of life has changed, and हम लोग कैसे चीज़ों को परसीव करने लगे हैं ओवर द टाइम हमारे बिजी स्केड्यूल्स हो गए हैं हम लोग मेंटली परेशान हैं सही तो कोई भी नहीं है 100% राइट मैं भी आई ऑल्सो सफर मेंटली समवेयर थ्रू फ्यू थिंग्स एंड एवरीवन डज थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं people have knack for something or the other but and then ये सब चीज़ें हमें पर्सनली इफेक्ट करती हैं हमारी पर्सनल लाइफ को इमोशनल स्ट्रेस मेंटल स्ट्रेस फिजिकली इनकेपेबिलिटीज ऑफ हैंडलिंग थिंग्स सो इस पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन टॉपिक्स पे बात करने के लिए क्योंकि कोई जनरली बात करता नहीं है और करते होंगे तो बहुत कम लोग करते हैं देयर नॉट मेनी पीपल आउट देयर हु रियली आर focusing on a fitness aspect of mental health and how it can help you leverage other things in life. Uh, it's not that easy, for everyone to get onto it. Wake up maybe early morning or an evening, session, which can, or try to make your life better. All of a sudden, thinking about something at 3 a.m. and like okay, tomorrow I'm gonna go and make my life so much better. So it's tough for everyone. एंड द मेन प्रॉब्लम इज दैट हमारा जो लाइफ स्टाइल हो गया है वो बहुत अजीब हो गया इट्स बिन वियर्ड वेरी वेरी वियर्ड एज पीपल हु वर्क इन कॉर्पोरेट जॉब दे टेंड टू लिव इन अ बिग सिटी typically 9 to 5 is just a tag but I would say like a 9 to 8 or 9 to 7 job so बहुत टफ हो जाता है हमें अपने एक नॉर्मल स्केड्यूल फॉलो करना जब आपका पूरा दिन ही काम से रिलेटेड हो राइट और आप काम के बाद आपके पास बेली टाइम होता है कोई भी एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी फिगर आउट करने के लिए या कुछ करने के लिए प्रॉब्लम ये है कि ये सब तो ठीक है आप विच हेल्प्स यू पुट द ब्रेड ऑन द टेबल ये सब सही है काम वाम वो सब इट्स ऑल गुड बट जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं इन सब चीज़ों के आपको कैसे मेंटली अफेक्ट करता है हम लोग कैसे फिजिकली इनकेपेबल होते जा रहे हैं लिथार्जिक होते जा रहे हैं चीज़ों को लेके जिससे हम लोग अपने ऊपर फोकस ही नहीं हमने फोकस करना छोड़ दिया अपने ऊपर टू मच इंडल्जिंग इन प्लेजर एक्टिविटीज़ लाइक ड्रिंकिंग स्मोकिंग डोपामिन रिलीज होता है आपके ब्रेन से इन सब चीज़ों में और आपको अच्छा फील कराता है बट इट्स लाइक पुटिंग अ कर्टेन और ट्राइंग टू शट योर आइज ऑफ जो मेन इशू है मेन मुद्दे हैं चीज़ों में तो इन सब चीज़ों के लिए हमें एक सही अप्रोच चाहिए चीज़ों को फिक्स करने के लिए हम लोगों को एक सही गाइडेंस चाहिए सबको पता है क्या करना है एवरीवन नोज वेयर दे आर रॉन्ग वी ऑल आर ग्रोन अप एडल्ट्स मोस्ट ऑफ देम एंड वी ऑल नो व्हाट्स रॉन्ग विद अस व्हाट रॉन्ग वी आर डूइंग वी अंडरस्टैंड इट वेरी वेल बट द प्रॉब्लम इज दैट पुश दैट आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड वो इच्छा अंदर से वो चीज़ों को कंप्लीट करने की वो उनकी तरफ जाने की उन्हें अचीव करने की वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग बहुत ज़्यादा लैग करते हैं आज के टाइम में कभी आपने देखा है आई टेल यू समथिंग
आपको कोई चीज़ पता हो और आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, बट आपको कोई आए और समझाए तो आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगते हैं ओवर द टाइम, राइट? सेम, इट्स ऑल इन द ब्रेन, इट्स ऑल इन द ह्यूमन माइंड। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे आसपास एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है कि वो हमें इंडल्ज करता है इन चीज़ों में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है जितना हम लोग इसको इंपॉर्टेंट बना लेते हैं, ठीक है? आप बिग सिटी में देखिए, आई लिव इन गुड़गांव, एंड आप बिग सिटीज़ में देखिए, जैसे गुड़गांव हो गया, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली। The corporate culture has taken so much that drinking, drugs, smoking, everything has gone through the roof. People are thinking it's really cool to indulge in all those things, and it gives them happiness, and at the end of the day or at the end of the week they are like, fuck it, I'm just gonna chill and relax, and बट ये एक बहुत छोटा कवरेज है। इसकी वजह से देखें ना आप कितने आजकल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं लोगों को, कितने ज़्यादा लोग मेंटली अनस्टेबल हैं, फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, हमेशा स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सबके प्रॉब्लम्स है, एवरी वन गोज थ्रू फैमिली प्रॉब्लम, राइट? इज दैट हाउ यू डील विद देम, बट इफ यू आर ऑलरेडी वल्नरेबल एंड मेस्ड अप मेंटली एंड फिजिकली, इट जस्ट गेट्स वर्ड्स, इट डजंट हेल्प यू। सो मेन वो है कि आप इन सब चीज़ों से कैसे, मतलब हाउ यू कैन एक्चुअली गेट थ्रू ऑल दोज थिंग्स इन अ बेटर वे, दैट्स द मेन क्वेश्चन, दैट्स वेयर इट ऑल कम्स डाउन टू। मुझे भी होता है, एंड आई ऑल्सो टेक माई टाइम व्हेन आई सफर समथिंग टू मेंटली, और बट एटलीस्ट आई गिव माई बेस्ट फिजिकली, यू नो जैसे मैंने बोला कि मैं फिटनेस एंथुसियास्ट हूँ, एंड आई लव रनिंग, आई लव लिफ्टिंग वेट्स, and it's beyond lifting weights, it's like just getting out there, doing something which really makes you feel better about yourself, and makes you feel confident, जो आज के टाइम में हम बहुत ज़्यादा लैक कर रहे हैं, ठीक है? आप कभी मैं लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, आप कभी जिम जाओ, आपको सिर्फ 10% लोग दिखेंगे जो प्रॉपर शेप में, ठीक है? और बाकी आपको मोस्ट ऑफ द पीपल आर ट्राइंग, दे डू और दे लीव इट, और दे गिव अप, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक इमेज बनाते हैं अपने दिमाग में कि हम लोग ये अचीव कर लेंगे इतने शॉर्ट फ्रेम में, या ये अचीव कर लेंगे। आप भी इंटरनेट पे बॉडीज देखते हैं, मेरी भी वैसी बॉडी नहीं है, ठीक है? बट येस, आई एम गुड इन लिफ्टिंग, आई ट्राई टू रन एवरी डे, आई हैव अ डिसेंट रनिंग कैपेबिलिटीज which are enough for me to stay healthy and fit. You don't really need a 4-pack or a 6-pack to stay healthy. बहुत टफ होता है उसको बहुत टाइम तक मेंटेन करना, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा कैलोरी एक डेफिशिएंट खाने बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, सबके बस की नहीं, मेरे बस की भी नहीं है, ठीक है? मैं भी 70% क्लीन खाता हूँ, 30% मैं भी क्लीन नहीं खाता हूँ। बट मेन है कि रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है, जिसमें हम लोग गिव अप कर देते हैं। सो मेरी अप्रोच ये रहेगी कि एटलीस्ट मैं आपको समझा सकूँ कि एवरीथिंग इज नॉट वॉट यू सी एट द एंड, द जर्नी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हाउ गुड यू फील इन द जर्नी। आपको फाइनल प्रोडक्ट तो दिख रहा है कि वो किसी के बहुत चिजल बॉडी है या बहुत बहुत हुआ है, बट दे कुड बी गोइंग टू समथिंग एल्स, राइट? सो वो ये कि बट येस, फिटनेस डज, स्टेइंग एक्टिव, फिटनेस डज रियली हेल्प यू to put a big, at least a bandage over what you're going through, and that's, I don't know if that's the right term I've used here. It's really going to help you in a lot of ways, and I will discuss about it a lot in coming videos, in next coming videos, which I'll be posting. I want to really make awareness around fitness, what is all dilemma about, tons of information on the internet. I'll try to break it down to the best I can, जो मैंने अपने ऊपर खुद अप्लाई करी हुई हैं, मैं वही सब बताऊंगा आपको। कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगा मैं आपको जिसमें यू माइट फील कि ओ ये तो मतलब हाइपोथेटिकली बोल रहा है, या अनअचीवेबल है, या बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? सो ये सब बहुत, और मैंने खुद अपने ऊपर मैंने वेट अपना बहुत गेन किया, फिर लूज़ किया, मैंने फिर गेन किया, फिर लूज़ किया। ओवर द ईयर्स आई हैव लॉस्ट, गेन एंड लॉस अकॉर्डिंग टू वेयर आई नीडेड टू। मैं बहुत साल यूएस में रहा, एंड आई डिड नॉट हैव वेरी हेल्थी लाइफ स्टाइल देयर। बिफोर दैट आई डिड, बट देन आई वाज देयर एंड आई हैड सम जॉब रिलेटेड इश्यूज एंड वीजा इश्यूज जो बहुत चलते हैं यूएस में टिपिकली, एंड इट ऑलवेज कीप्स यू स्ट्रेस्ड आउट, यू नेवर नो व्हाट्स योर नेक्स्ट डे गोना लुक लाइक, दे माइट थ्रो यू आउट ऑफ द कंट्री
So over that stress, it's hard to maintain a physical, well-being. It's very tough. I tried. ऐसा नहीं है मैंने try नहीं किया because I was already into it. I tried a lot, but it becomes really tough. And उसके बाद मैंने खुद जब when I came back to India, I realized that this is not something or this is not some kind of lifestyle I really want to live. बहुत टफ मुश्किल लाइफ स्टाइल है. आप एक ओवरवेट पर्सन की तरह एक नॉर्मल लाइफ को जीना. यू एवरीथिंग गोज हे वायर इन योर बॉडी, योर शुगर लेवल्स और cholesterol levels. And then I cut down 20 kgs. I'll post pictures as well, while I'll share how I did it. But everything came from here. You have to realize that one thing. It's that, and that you are just this way to change your life. But what keeps you going is not motivation. We'll talk about it. Motivation. लोग मेरे से पूछते हैं motivation कैसे मिलता है, सब कैसे मिलता है. Motivation is not the thing. अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जहाँ पे मैंने देखा कि इंडिया एक ऑफिशियली वर्ल्ड डायबिटिक कैपिटल हो गया है, जिसमें ऑलमोस्ट 101 मिलियन जो लोग हैं वो डायबिटिक हैं. 136 मिलियन आर प्री डायबिटिक एक कंडीशन होती है जिसमें आप यू आर ऑन द वर्ज बिटवीन अ नॉन डायबिटिक एंड अ डायबिटिक पर्सन. इफ यू डोंट मेंटेन एंड हैव अ गुड लाइफस्टाइल, यू विल प्रॉब्ली बी डायबिटिक इन लाइक अ ईयर और हाफ और सो. एंड देन अभी मैंने देखा कि जो कैंसर के जो रेट्स इंक्रीज हुए हैं वो 79% इंक्रीज हुए हैं. पीपल अंडर 50 ऑफ एज, कैन इमेजिन 79%. जहाँ पहले 100 लोगों को होता था वहाँ पे वही चीज़ 179 लोगों को हो रही है, और वो भी अंडर द एज ऑफ 50 हैं वो लोग. सो ये सब हेल्थ इश्यूज हैं जो रिसेंटली आना शुरू हुए हैं. ये एंड प्रॉब्लम क्या है, ये इज इट इंडियन डाइट और हमारा लाइफस्टाइल है, और हमने एक ऐसे मेंटली एक ऐसा लाइफस्टाइल बना लिया अपने आसपास कि बहुत टफ है उन सब चीज़ों को रेक्टिफाई करना बहुत जल्दी. बट यस, अगर एक सही अप्रोच ली जाए तो वी कैन डू अ लॉट बेटर फॉर अस, फॉर द पीपल वी लिव विद, एंड फैमिली, इन सब के लिए. बिकॉज आप देखेंगे तो डिजीज आर ऑन इंक्रीज, शुगर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक्स. पहले सब इशूज़ इतने नहीं होते थे, अब ये इशूज़ बढ़ना शुरू हुए हैं रिसेंटली. विद इन लाइक कपल ऑफ ईयर्स में हमने इतना सर्च देखा है इसमें, इन इश्यूज़ में. तो इन सब के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, इन सब के ऊपर भी हम चर्चा और विल हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन अबाउट इट. बट ये हमारा फूड है, ये हमारा लाइफस्टाइल है, लाइक क्या एड अप करता है इन सब चीज़ों को, व्हाट एड्स अप टू ऑल दोज थिंग्स. ऑफ कोर्स आई एम नॉट डॉक्टर एंड डोंट नो द बेस्ट, बट व्हाट आई हैव लर्नड एंड व्हाट आई हैव इन्फॉर्मेशन आई हैव गैदर्ड, आई कैन totally guide you on that. Thanks a lot for your patience, guys. I know the video थोड़ी लंबी हो गई है, and apologize because it was my first video, and I thought I'll try to touch few points which I want to discuss, in my upcoming videos. So अब आपको मैं जनरल इंट्रो दे रहा था अपने बारे में, एक किस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, क्या थॉट प्रोसेस रहेगा, क्या किन किन चीज़ों को हम टच करेंगे, इंपॉर्टेंट इश्यूज, एंड ऑफ कोर्स अ लॉट मोर which I haven't discussed in the video. But I'll make sure that next videos will be a little shorter, more crisp to the content, and of course ये भी to the content थी मेरे हिसाब से, but in case you felt that it was a little too much or a little longer, but we will touch a lot of topics with I think generally scattered है बहुत, और एक जगह information available नहीं है उनकी, and मैं कोशिश करूँगा अपनी सोसाइटी को हेल्प करने की, आप लोगों को हेल्प करने की. मे बी, और अगर मैं किसी एक इंसान की लाइफ भी चेंज कर पाया अपने वीडियो के थ्रू, तो आई थिंक आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन दैट डे, और आई विल फील लिटिल बिट यूजफुल. इट्स Elon Musk said, like if you watch his podcast or if you ever watch his interviews, he says that it's very hard to be useful. It's people are generally not useful. They do their work, but if you can be really useful, that's really something, which is really hard. So me changing someone's life personally will give me a feeling of being useful. Of course, helping others, being हम कहीं ना कहीं हम लोग useful होना चाहते हैं. As a human, we have lot of emotional, bandwidth of a lot of things, anger, emotions, love, everything. So but a feeling of being useful to someone and think that you've changed someone's life for better and not for worse, obviously, I think gives you a different high and a different feeling of accomplishment. So मेरा बस वही motive इन videos के through, to stay motivated, to teach you or to be on a path of a good mental and healthy lifestyle.
and be a better human being as a person, or be the best version of you can be yourself. You can't do everything that other people can do. You can't be someone, donating food every day because it's something which you can't do. Maybe your pocket doesn't allow that. But of course, making small changes in, helping someone small on the street, can make a big difference. So, but yes, if you work towards changing people's life, I'm sure, it's gonna make your life better. We grow by uplifting others. You always remember that. So, I'll see you guys soon, and thanks for being a very lovely and patient audience. See you.